Yeah, I would like to tell you कि today I will discuss the remaining part of Aristotle's concept of tragedy or drama. उसको लेकर के बात करना है। तो कल हम लोगों ने हेमार्सिया को कुछ और चीजों को लेकर के मैंने डिस्कस किया था और आज मैंने आपको क्या भेजा, आई हैव सेंट यू अनदर फाइल आल्सो, दैट इज द पीडीएफ फाइल जिसमें लिटरेरी टर्म से रिलेटेड है और वो लिटरेरी टर्म निगेटिव कैपेबिलिटी है, इगोटिस्टिकल सबलाइम है और टचस्टोन मेथड है, फिलिस्टिनिज्म है। दीज वर्ड्स आई सेंट यू एंड सम अदर वर्ड्स आल्सो। सो लेट मी शेयर विद यू पीडीएफ फाइल जो कल का हमारा बचा हुआ था, उसे हम डिस्कस करेंगे। Yeah, tragedy and its components I have discussed with you yesterday. I have gone with these terms की tragedy में we find disaster, MH Abrams we have taken. We were taking this portion. कैथारसिस को मैं लेके चल रहा था, कैथारसिस मैंने डिस्कस किया था, but again I will take catharsis and I will also discuss these words. So यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो कौन सा है कि व्हेन आई टॉक अबाउट कैथारसिस, तो जो कैथारसिस है ये किससे रिलेटेड है? दिस कैथारसिस ग्रीक में एक क्या है कि ये कैथारसिस इज अ ग्रीक वर्ड। इंग्लिश में इसका मतलब क्या होता है? परगेशन है, प्यूरिफिकेशन है, आर बोथ यू कैन से। और यह क्या करता है? पिटी और फियर को अराउज करता है। इट अराउजेस पिटी एंड फियर। इन चैप्टर 6 ऑफ पोएटिक्स, जो चैप्टर 6 है पोएटिक्स, और ये पोएटिक्स किसका है? पोएटिक्स इज द क्रिएशन ऑफ अरिस्टोटल, और उसके चैप्टर 6 में अरिस्टोटल डिफाइंस व्हाट अरिस्टोटल डिफाइंस दिस कैसा कैथारसिस, और उन्होंने क्या लिखते हैं कि tragedy through pity and fear effects a purgation of such emotion. Already I told you कि in tragedy what we find? In tragedy we find pity and fear, and through pity and fear what comes? Purgation comes, and this purgation or purification in Greek is known as catharsis. So purgation, purification are emotional wash. So what I want to say, we have to keep in our mind some significant words, some important words we have to take, and these important words are these. So in a sense, the tragedy having aroused powerful feelings in the spectator has also a therapeutic effect after the storm and climax. There comes a sense of release from tension, और जो टेंशन होता है उससे आदमी को मुक्ति मिलती है। देन द पर्सन और द ऑडियंस जस्ट गेट्स द स्टेटस ऑफ काम। सो what I want to tell you, when you go with the term catharsis is ultimately what? It's the part of the tragedy, and it's a Greek word. It signifies what? It signifies purgation or purification or both. And it is what? It is the pleasure of pity and fear. And in chapter 6 of Poetics, Aristotle says tragedy through pity and fear effects a purgation of such emotion. So what I want to say कि it undoubtedly it arouses pity and fear, powerful feelings in the spectators, therapeutic effect भी है. You find a storm, and after storm we find a state of calm, all these things. So catharsis is nothing at all. It's a Greek word which refers to what? Which refers to purgation or purification or both. This purgation or purification, it comes how? Because in tragedy we find that ki there is the concept of pity and fear. Pity and fear arouses where? In the heart of the audience. And when pity and fear reaches at its climax, it comes in the form of what? It comes in the form of catharsis. So the next word is what? The next word is the anagnorisis. If I talk about anagnorisis, you will come to know ki in anagnorisis, what do we see? What do we find? When I talk about anagnorisis, a term used by Aristotle in Poetics to describe the moment of recognition. It's a very significant point.
to describe the moment of recognition. And what is the moment of recognition? Anagnosis, Greek recognition. Anagnosis is the Greek word which means recognition. But what recognition? Recognition of truth. Recognition of truth. What type of truth? When ignorance gives way to knowledge. जब हम अज्ञानता से प्रकाश की तरफ आते हैं, ज्ञान की तरफ आते हैं, then that thing is known as what? Then that thing is known as anagnosis. It means what? It means that ki anagnosis is a situation in which we come to know what? From ignorance to the way of knowledge. Yeah, it give when ignorance gives way to knowledge. According to Aristotle, the ideal moment of anagnosis coincides with peripetia. Another term is what? Another term is peripetia or reversal of fortune. These are the words which you have to keep in mind. If the question comes ki define peripetia, this peripetia means reversal of fortune. And how the reversal of fortune? Everything is going in normal direction, in normal way, in right direction. But sudden the things are going to what? But sudden the things are going to change. From right direction, the things just turn into the wrong direction. This changing of the direction means what? Reversal of fortune. It means that कि अभी तक ये लग रहा था कि we have what? We have a lucky fortune, but suddenly things turned into a bad one. तो ये चीजें जो होती है, इस पार्टिकुलर चीज को क्या कहा जाता है? एनाग्नोसिस कहा जाता है। और जब ये चीज टर्निंग होगा तो वो क्या है? पेरिपीटिया। लेकिन एनाग्नोसिस क्या है? एनाग्नोसिस का मतलब ये है कि फाइंडिंग द ट्रूथ and recognition of the truth. How to find the truth? Ultimately, we were living a darkful life, but this darkness gave to what? This darkness gave to, you can say कि ignorance gives way to what? To knowledge. When ignorance gives way to knowledge, then this situation is known what? Then this situation is known what? This is the anagnosis. It means that कि अगर if you take the example of Macbeth, so you will come to know कि Macbeth was fighting in the battlefield after when the when the hurly burly is done, yeah, when the war is done, he comes back to home, but in the mid of the way, he is welcomed by whom? By the three witches. Everything was normal, nothing at all. But when he comes to know about about the prophecy of the witches, then of Cardin, then of Glamis, and the future king of Scotland, you will come to know कि his ambition, evil ambition, it becomes important, and he starts to think how can be he king if the King Duncan is alive. Then he makes a plan that he has to assassinate King Duncan, and then what happens that you will come to know he murders King Duncan, he assassins King Duncan. सब कुछ उस समय भी बेहतर चलता रहता है, लेकिन अचानक you will come to know what happens as he murders Banquo and Macduff's wife and son. Then the situation becomes from bad to worse, and that was the climax of Macbeth's progress. And here you find what? Here you find the reversal of fortune. And here you come to know about the truth. And what is the truth? Yeah, Macbeth comes to know about the truth. Yeah, we come to know about the truth. That this is the situation where we find ignorance from knowledge. Ki just what starts, it starts the, you can say, downfall of Macbeth begins. What I want to say, when we go with the word anagnosis, just we have to only define ki anagnosis is a Greek word refers to recognition. What to recognition? किस चीज की पहचान करना? A term used by Aristotle in poetics. इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, सबको पता है कि अरिस्टोटल ने यूज किया, पोएटिक्स में यूज किया. But what to describe? To describe the moment of recognition of truth. A term
used by Aristotle to describe the moment of recognition of truth. And what truth? When ignorance gives way to knowledge. What ignorance? The ignorance that everything is normal, the ignorance that I have a bright future. But suddenly what comes? Suddenly peripetia comes. And this peripetia means reversal of the fortune. And reversal of the fortune means the good fortune is going to turn into a bad fortune. The good fortune is going to turn into a bad fortune. For example, what? The classic example in Oedipus Rex, when Oedipus discovers he has himself killed लाइस कि उसने खुद लाइस को मारा जो है दैट इज द पॉइंट. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है. तो जस्ट आई वांट टू नो इतना चीजें की ये चीजें याद रखना है. जस्ट आई वांट टू नो फ्रॉम विंध्याचल जी कि विंध्याचल जी कि व्हेन आई टॉक अबाउट एनाग्नोसिस इट्स अ ग्रीक वर्ड बट व्हाट डज इट डिनोट, व्हाट डज इट रिफर? या आप में से कोई भी, नॉट ओनली a specific person, then I will go ahead. Anagnorisis refers to what? Anyone? Recognition, sir. Okay, good. Now, yeah. Now it refers to recognition, but what type of recognition? From ignorance to knowledge. From ignorance to knowledge. And when you come to know from ignorance to knowledge, already I told you, then that ignorance to knowledge is what? Hakik ji, Maithili Sharan ji, from ignorance to knowledge, how do you come to know from ignorance to knowledge? Which is true, sir. Yeah, from ignorance to knowledge, that is truth, and that is in the form of peripetia, reversal of fortune. Reversal of fortune. The good Reversal fortune of turns to bad fortune. yeah, it turns the good, yeah, good fortune, yeah, you can say ki a bright fortune turns into a dark one. Yes, that is the point. So you can give any example, whether you want to give the Oedipus complex or any other, you can just give. So what the term you have to use, anagnorisis, it refers to what? It refers to just the moment of recognition. What the moment of recognition? When ignorance gives way to knowledge, and how you will come to know, that is the that is what? That is just a peripetia or reversal of fortune. So you don't have to miss the peripetia, you don't have to miss the anagnorisis, you have to just define. So I think now you got it. Just telling you Hamartia. These are only the words, these are only the components of tragedy. If you talk about Greek tragedy, you see these things. So you have to keep in your mind these words and you have to define it in this way. If you find the short answer type question, if you find the basic characteristics of Greek tragedy, then you have to go, yeah, Aristotle's concept of tragedy. Without telling these words or defining these words, you can't tell आगे की चीजें. So if I talk about Hamartia, Hamartia means error. ये भी ग्रीक शब्द है, इसका मतलब क्या होता है? एरर होता है. Primarily an error of judgment. What error of judgment? An error of judgment. It means that कि Hamartia are tragic flaw, a weak point in the character. Yeah, a weak point in the the protagonist character, which becomes the cause of his downfall. Yeah, which brings what? Which brings a judgment, which may arise from ignorance or some moral shortcoming. या तो यह इग्नोरेंस की वजह से होगा कि दैट पार्टी डजंट नो, या तो यह किसकी वजह से होगा? मॉरल शॉर्ट कमिंग की वजह से. शॉर्ट कमिंग सम वीक पॉइंट एंड दैट वीक पॉइंट बिकम द कॉज ऑफ हिज डाउनफॉल. फॉर एग्जाम्पल के लिए, इफ आई गिव यू द एग्जाम्पल ऑफ मैकबेथ, what is the weak point of Macbeth? The weak point of Macbeth is evil ambition. That evil ambition become the cause of his downfall. अगर मैकबेथ ने किंग बनने की चाहत न दिखाई होती तो सब कुछ नॉर्मल रहता. किंग डंकन के बाद वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल
आप कह सकते हैं मिनिस्टर ऑफ किंग डंकन्स किंगडम, he will remain. But what happened? He has evil ambition, he has dreamed to be the king, and this is why what happens, you find this problem. And here you will come to know कि ये चीजें हाइमार्सिया यही उसके पतन का कारण बनता। तो हाइमार्सिया ग्रीक एरर primarily an error of judgment which may arise from ignorance or some moral shortcomings. Discussing tragedy and the tragic hero in poetics. कौन एक मिनट। So you find what you find कि just what you will come to know कि discussing what discussing this concept and what is that concept, that is the shortcomings. We are discussing tragedy and the tragic hero in poetics. Aristotle points out that the tragic hero ought to be a man whose misfortunes come to him not through vice or depending. It's a very significant point in the view of the Aristotle. अगर कोई भी कैरेक्टर है जो कि क्या होगा, अरिस्टोटल ने पोएटिक्स में कहा कि जो ट्रेजिक हीरो है उसका मिसफॉर्च्यून इसलिए नहीं होगा, पॉइंट्स आउट दैट द ट्रेजिक हीरो आर टू बी अ मैन हुज मिसफॉर्च्यून्स कम टू हिम not through vice or depravity. Vice or depravity. DEPRAVITY. Just I want to know what is vice या what is depravity. I just want to know कि what is vice या what. ठीक है, शॉर्ट का भी। तो अरिस्टोटल का जो कहना है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज की हियर आई वांट टू नो व्हाट इज द अपोजिट ऑफ वाइस, VIC. What is the opposite of vice? Virtue. Virtue. It means that what Aristotle says कि the cause of the downfall of a tragic hero in Greek tragedy is not his vice. How do you take evil ambition of Macbeth? Is it a vice या is it a shortcoming? How do you take the evil ambition of Macbeth? Is it a vice या is it a shortcoming? Vice, sir. Shortcoming. It's a vice. It's a shortcoming in another way, but try to it's a vice. ये अवगुण है। Evil ambition की बात नहीं कर रहा। I'm just talking about evil ambition. यह shortcoming है। सॉरी, इविल एम्बिशन जो ये क्या है, ये आपका वाइस है। नाउ टेल मी कि इफ आई टॉकिंग अबाउट वाइस, दिस वाइस, तो उन्होंने क्या कहा, अगर आपको याद होगा कि शेक्सपियर कह देते हैं कि कैरेक्टर इज डेस्टिनी, और जबकि जो है अरिस्टोटल कहते हैं डेस्टिनी इज कैरेक्टर। व्हाट आई वांट टू से, इन द व्यू ऑफ अरिस्टोटल, if you find the downfall of a tragic hero in Greek tragedy, that is not because of his vice, that is not because of his depravity, but by some error. That is, some error means some mistake. Some mistake. And this mistake, this error, becomes the cause of his downfall. For example, Oedipus kills his father from impulse and marries his mother out of ignorance. Now I want to know कि the thing which has been done by Macbeth, was it ignorance? Macbeth murdered King Duncan. Yes, sir. Did he murder King Duncan in ignorance? अज्ञानता में उसने उनका मर्डर किया? No, sir. No, sir. No, not at all. No, not at all. Ambition, sir. Yeah, due to vice, due to evil ambition. Yes, Try to yes. understand.
due to evil ambition. First, you should try to know the two important things. And what are those two important things? Number one, the downfall of the hero in Greek tragedy is not because the hero has some vice or depravity, but what? But you find some error. But for what? But because he has some error, some mistake, and that mistake is done in ignorance. But in Shakespearean tragedy, the mistake is done deliberately. The mistake is done knowingly. For बट example, ओथेलो में तो उसने इग्नोरेंस से किया था ना. how do you come to know with ignorance? In Othello, the particular thing is not what? The particular thing is not only the one point, the downfall of the hero. That was what? If he murders Desdemona, undoubtedly the murder of Desdemona was done on the basis of ignorance. But behind that thing, that was not only the cause of his downfall. You will come to know what was that thing. That thing was only one point ki he was not able to read the person who just who was behind the conspiracy. Who was behind the conspiracy? Iago ka. So that was the plan of the Iago, and Iago was with you, and you know it very well that he was your biggest enemy, and you have to trust to your wife. But due to the masculinity, due to you can say ki a blind eye, you didn't believe in your wife, and you came to know about what you came to know in the hand of a conspirator. इफ यू से अबाउट हैमलेट की हैमलेट का डाउनफॉल क्यों होता है? डिले इन एक्शन, बार बार हैमलेट को मौका मिलता है अपने फादर का, अपने चाचा का मर्डर करने के लिए, फादर की मौत का बदला लेने के लिए, बट हैमलेट डिडंट कैच दैट थिंग, हैमलेट डिले. तो वो जो डिले रहा है वो तो हैमलेट को पता ना, आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, आई गॉट दैट अपॉर्चुनिटी, वहां इग्नोरेंस नहीं रहा है. किंग लियर ने क्या किया था? किंग लियर ने चिकनी चुपड़ी बातों में आकर के जो है उसने वो इग्नोरेंस नहीं है, बल्कि वह क्या है? दैट इज वर्ड इग्नोरेंस का मतलब ये है कि समथिंग विच आई डोंट नो, एकदम से मुझे उसके बारे में नहीं पता, एकदम से नहीं पता. ओथेलो में जो डाउनफॉल का सबसे बड़ा रीजन रहा है वह कौन सा नेचर था? वह जेलस नेचर था. जेलसी वहां पे बहुत ज्यादा थी जी सर. उस पार्टिकुलर चीज की वजह से. ऐसा नहीं था कि जो डेस्टिमोना का कैरेक्टर ही एक बड़ा रीजन उसके पतन का कारण, नो नॉट एट ऑल. यागो और उसके बीच का वो जो लड़ाई झगड़ा था वह एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, लेकिन जो हीरो में वीक पॉइंट था, वह हीरो में वीक पॉइंट का क्या मामला था? सबसे पहला चीज की he was not in position to read the character of someone. Even he could not read the character of his wife, he could not read the character of the villain Iago and all the person who are living with him. So it's what? It's a mistake अगर देखा जाएगा तो ये चीजें. और सेम यही चीजें किंग लियर ने किया कि किंग लियर could not read the nature of his three girls, कि कौन ट्रूथ है उसमें. ये चीजें नहीं रही कि इग्नोरेंस में जैसा इडिपस ने किया कि अपने फादर को मारा फिर अपनी माँ से शादी कर लिया. ये जो प्रॉब्लम है यह चीज क्या है? ये चीजें हो सकता है, लेकिन और भी चीजों में वहां पे क्या रहा है? वहां पे कैरेक्टर इज डेस्टिनी रहा है. वहां पे लक का कोई बात नहीं, फॉर्च्यून की कोई बात नहीं कि मैकबेथ वाज अनलकी, किंग लियर वाज अनलकी, वहां लक उतना ज्यादा नहीं रहा. लेकिन ग्रीक ट्रेजेडी में क्या होता है? लक मायने रखता है कि फला कैरेक्टर इज अनलकी, दिस इज व्हाई या वट एवर हैज बीन रिटन बाय द गोल्डन पेन ऑफ गॉड दैट कांट बी चेंज एट ऑल. So this thing you find, this is why what I am saying here कि अरिस्टोटल का ये कहना था कि वाइस या डेप्रेविटी की वजह से कैरेक्टर का डाउनफॉल नहीं होता, बल्कि किसका कावा करके लिखा गया, बट बाई सम एरर. और यह गलती कैसा किया गया? इग्नोरेंस में किया गया. किसके माध्यम से? इडिपस के माध्यम से. आगे यू फाइंड दैट वर्ड की resist the law of the state from stubbornness and defense. That is another thing, but here you find some example that I don't think that's much important. Phaedra is consumed by her passion for Hippolyte. That is another thing. And here you find ये एक important portion आता है. One common form of hamartia in Greek tragedies was hubris.
If the person asks what is hubris, hubris is another form of hamartia. Hamartia means tragic flaw. Hamartia means tragic flaw. So another form of tragic flaw in Greek tragedy is hubris, and it shows what? It shows pride, overweening, self-confidence, which leads a protagonist to disregard a divine warning. कभी कभार आप देखेंगे कि ग्रीक ट्रेजेडी में इट हैज बीन टोल्ड दैट कि द प्रोटेगनिस्ट disregard a divine warning, and when protagonist disregard a divine warning or violate an important moral law, then that particular downfall is known as hubris. Can you give me any beautiful example in Indian literature? The example of hubris, disobeying of divine warning, which becomes the cause of his downfall? Do you remember Kans, Vasudev and Devki ji? Yes, Remember sir. that story? What happens? There was a divine warning ना कि आप इनकी 8वीं संतान के द्वारा मारे जाएंगे, आप अत्याचार ना करिए. जी सर. But what Kans did? Kans disobey. सो एक चीज ध्यान में रखना, ह्यूब्रिस किसको कहा जाएगा? एक ऐसा प्राइड, घमंड या ओवरवीनिंग या सेल्फ कॉन्फिडेंस विच लीड्स अ प्रोटेगनिस्ट. प्रोटेगनिस्ट सेंट्रल कैरेक्टर क्या करता है? डिसरिगार्ड करता है. किसका डिसरिगार्ड? डिवाइन वार्निंग का. डिवाइन वार्निंग का. आकाशीय जो आपका भविष्यवाणी है या आदेश है, जब उसका डिसोबे होगा या उसको वायलेट किया जाएगा, तो उसकी वजह से जो पतन होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको ह्यूब्रिस कहा जाता है. तो इसमें क्या है? डिवाइन वार्निंग है और इसमें क्या है? प्राइड है, ओवरविनिंग है. सो दिस डिफिनेशन यू हैव टू लर्न. वन कॉमन फॉर्म ऑफ हाइमार्सिया in Greek tragedies was hubris, that refers to pride, overweening, self-confidence, which leads a protagonist to disregard a divine warning or to violate an important moral law. If you have any problem, you can just tell me. No, sir. Should I go ahead? Sir. Sir. Okay. Okay. Now you find the next point, that is what? That is tragic hero. अब अरिस्टोटल की नजर में who is a tragic hero? If you find the concept of Aristotle's concept of tragic hero, then you have to keep in your mind. If you find the concept of hubris, then these words you have to keep in your mind. उसके पहले मैंने आपको जो बताया, क्या बताया? हाइमार्सिया मैंने आपको बताया. हाइमार्सिया के अलावा मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको जो है एनाग्नोरिसिस बताया था, मैंने आपको कैथारसिस बताया था. कैथारसिस में आपको कुछ नहीं करना है. परगेशन, प्यूरिफिकेशन आर बोथ pity and fear का concept, these words you have to keep in your mind. हाइमार्सिया में आपको मैंने क्या बताया था? हाइमार्सिया का मतलब कि tragic flaw, error or something you can say कि which become the cause of the downfall or shortcomings. You have to remember these things. एनाग्नोरिसिस में मैंने आपको क्या बताया था? आई जस्ट टोल्ड यू रिकॉग्निशन ऑफ ट्रूथ फ्रॉम इग्नोरेंस टू द वे ऑफ नॉलेज, and then you find ki peripetia, reversal of fortune. These words you have to define. Now you will come to know about tragic hero. Aristotle says that the tragic hero will most effectively evoke both our pity and terror. हमारा ट्रेजिक हीरो ही हमारे अंदर दो चीजों को जन्म देता है, पिटी को और टेरर को. टेरर मीन्स फियर को. हमारे अंदर जो है पिटी और फियर का तभी अराउज होगा जैसा हमारा ट्रेजिक हीरो होगा. अगर ट्रेजिक हीरो बिल्कुल सेटन जैसा होगा तो देयर विल बी नो पिटी बट देयर विल बी ओनली फियर. ट्राई टू अंडरस्टैंड. देयर विल बी नो पिटी बट देयर विल बी ओनली टेरर या देयर विल बी ओनली फियर. अगर ट्रेजिक हीरो सेटन होगा. इफ द ट्रेजिक हीरो विल बी ओनली एंजल,
then there will be only pity and there will be no fear. कुल मिलाकर के बहुत सिंपल वर्ड्स में मैं बताना चाहता हूं कि अगर ट्रेजिक हीरो आपका मैन नहीं होगा, वुमन नहीं होगा, ह्यूमन बीइंग नहीं होगा, अगर ट्रेजिक हीरो सेटन होगा तो केवल जो है वह फियर को जन्म देगा। अगर ट्रेजिक हीरो एंजिल होगा तो वह केवल पिटी को जन्म देगा, क्योंकि एंजिल जो होते हैं वो मासूम होते हैं, कोई गलती नहीं करते, और किसी ऐसे आदमी का जो सज्जन है अगर उनका पतन होगा तो केवल पीटी, दया ही दया आएगी। और कोई बहुत बुरा होगा अगर उसका पतन होगा तो केवल फियर और टेरर होगा, और ये दिमाग में आएगा अच्छा हुआ मर गया। लेकिन उन्होंने कहा कि कॉन्सेप्ट ऑफ pity and fear will arouse only in that situation if the tragic hero is neither absolutely good nor absolutely bad। अगर हमारा ट्रेजिक हीरो ना तो एकदम से अच्छा होगा ना एकदम से बुरा होगा, बल्कि अच्छाई और बुराई का मिश्रण होगा, मतलब वह ह्यूमन होगा, तब चीजें बेहतर होगी। सो यू विल कम टू नो व्हाट यू विल कम टू नो थारोली। बट उन्होंने क्या कहा, थारोली बैड, एक चीज कि जो इफ ही इज नीदर थारोली गुड, हमारा ट्रेजिक हीरो नीदर थारोली गुड होना चाहिए, नॉट थारोली बैड, बट अ मिक्सचर ऑफ बोथ, बल्कि दोनों का मिक्सचर होना चाहिए। एंड आल्सो दैट दिस ट्रेजिक इफेक्ट विल बी स्ट्रांगर इफ द हीरो इज बेटर देन वी आर। What do you mean this? It means that our tragic hero should neither absolutely good nor absolutely bad। अगर एकदम से अच्छा होगा तो वह एंजिल कहलाएगा, एकदम से बुरा होगा तो शैतान कहलाएगा। हमारा ट्रेजिक हीरो क्या होना चाहिए, इंसान होना चाहिए जो अच्छाई और बुराई का मिश्रण है। और इंसानों में किस तरह का होना चाहिए, बेटर देन वी आर, थोड़ा सा हमसे बेहतर हो, उसका स्टेटस बेहतर हो, उसका अपना और चीजें थोड़ी सी हमसे बेहतर, जो हमारा स्टेटस है। इट मीन्स दैट कि इन द सेंस दैट ही इज अ हायर, वह उसका स्टेटस हायर होना चाहिए देन ऑर्डिनरी। आप कह सकते हैं कि नॉर्मल वर्थ, ऑर्डिनरी नॉर्मल वर्थ से वो थोड़ा सा हायर होना चाहिए। सो आई थिंक कि यू गॉट दिस पॉइंट, इतना जो यहाँ पे लिखा गया है ये पॉइंट क्लियर हो गया। Yes, sir. It's clear. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके ओके। नाउ यू कम सर टू नो कि देयर इज, सर या सर ये पूछना था कि क्या यहाँ पे मैं उनके शेक्सपियर और इसमें डिफरेंस है क्या, इनके ट्रेजेडी और उनके ट्रेजेडी में? नहीं, यहाँ पे डिफरेंस नहीं है, कुछ ट्रेजिडीज का कुछ चीजों का डिफरेंस है, जैसे डिफरेंसेस यू विल कम टू नो नॉट रिगार्डिंग ट्रेजिक हीरो, ट्रेजिक हीरो को लेकर के उनका डिफरेंस नहीं है। लेकिन उसमें एक डिफरेंस जरूर है, वो डिफरेंस क्या है कि इफ आई टॉक अबाउट थ्री यूनिटीज का, तो थ्री यूनिटीज मीन्स यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस एंड यूनिटी ऑफ एक्शन। You don't जी find that thing in Shakespearean tragedy. If I talk about the role of chorus, you don't find in Shakespearean tragedy. If I talk about poetic language, you will come to know कि अरिस्टोटल ने क्या किया था, अरिस्टोटल emphasized upon the use of only poetic language, but in Shakespearean tragedy you find both means the use of both prosaic and poetic languages। हाँ, एक डिफरेंस हम लोग और पाते हैं, वह कौन सा डिफरेंस होता है कि इन शेक्सपियरियन ट्रेजेडी देयर इज द ब्लेंडिंग ऑफ ट्रेजिक एंड कॉमिक बोथ एक्शन, बट इन ग्रीक ट्रेजेडी देयर वाज द स्ट्रिक्टली देयर वाज द सेपरेशन ऑफ ट्रेजिक एंड comic action। If you are writing tragedy, there should be no mingling or blending of comic action, that should be purely tragedy। These things we come to। ओके सर। लेकिन जहां पे बात ट्रेजिक हीरो की आती है, तो खुद आप ये देखेंगे कि जहां पे बात ट्रेजिक की आती है तो उस ट्रेजिक हीरो में यू विल कम टू नो कि ऑलरेडी मैकबेथ आपका अच्छा भी है और बुरा भी है। जब तक किंग डंकन की हिफाजत करता है इन द वेरी बिगिनिंग ही इज अ गुड मैन। तो मैकबेथ ऐसा नहीं है कि दैट इज प्योरली एंजिल एंड दैट इज प्योरली सेटन, बल्कि मिक्सचर ऑफ गुड एंड बैड एलिमेंट। और तो सर जस्ट उसका, इसमें हाँ, सर इसमें हम इनके शेक्सपियर के ट्रेजेडी का मतलब एग्जाम्पल नहीं डाल सकते अगर इनको लिखना नहीं, होगा तो? you can just give there, but you have to explain। ओके Here ठीक you है। can give, यहाँ पे you can just mention।
And you can just say कि the same thing we find in Shakespearean tragedy. क्योंकि जो अरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी है, जो शेक्सपियर का कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी है, वो केवल हैमार्सिया को लेकर के, लगभग बाकी और चीजें अलग है। हैमार्सिया में जो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी है, उसके पीछे जो हीरो का डाउनफॉल है, वह उसका कैरेक्टर है, उसका वाइस है कि जैसा तुम बोगे वैसा तुम काटोगे। लेकिन जो ग्रीक ट्रेजेडी है, वहां पे जो हैमार्सिया है, जो ट्रेजिक फ्ला है, वह उसका लक है, उसका बैड फॉर्च्यून है। अगर आप इनोसेंट भी है, इफ यू हैव नॉट कमिटेड एनी रॉन्ग थिंग, इफ यू आर इनोसेंट, और आपका अगर पतन होता है, तो उस पतन के पीछे नहीं है कि यू हैव सम वाइस या यू हैव सम, यू कैन से यू हैव कमिटेड सम मिस्टेक्स, बट आपके पतन का मेन कारण ये है कि बिकॉज यू आर नॉट लकी वन। तो luck or bad fortune, that is the key point in Greek tragedy behind the downfall of any hero or character. You got it, I think. जी जी, थैंक And the same thing you find in Shakespearean tragedy कुछ के साथ। अगर आप बताइए, ओथेलो में आपने पढ़ा है, ओथेलो में, नॉट ओथेलो, बट इफ आई टॉक अबाउट हैमलेट, हैमलेट के को लेके इफ आई टॉक अबाउट हैमलेट में ओफिलिया का क्या गलती थी? कोई गलती नहीं थी, लेकिन मेरी नजर में वह एक बहुत ही ट्रेजिक हीरोइन रही है। ओफिलिया didn't commit anything. She was pure, she was innocent, but she didn't get anything. She didn't get Hamlet, she didn't get the love of Hamlet, she does not have any designation, any respect or honor. सब कुछ उसका तबाह हो जाता है। तो उसका तो जो पतन होता है, उसने कोई गलती नहीं की ना। उसने कहा गर्ट्रू को मारा, कहा क्लाउडियस को मारा, कहा जो है हैमलेट को इतना ज्यादा कहा, लेकिन फिर भी उसका डाउनफॉल होता है और हैमलेट से पहले तबाह हो जाती है। ऐसे ही डेस्डिमोना की तबाही के पीछे कोई उसका नहीं था। एन इनोसेंट एंड फेयर लवली गर्ल हु बिलीव्ड इन दैट ओथेलो। तो ये जो कैरेक्टर है, इस तरह का पतन में क्या नजर आता है कि इनके पतन के पीछे उनका बैड लग रहा है। लेकिन जो पतन मैकबेथ का है, जो पतन आपका ओथेलो का है, जो पतन आपका इयागो का है, उसके पीछे उनका कर्मा वाज इम्पोर्टेंट, उनका कर्मा वाज इम्पोर्टेंट। So you find tragic flaw traditionally, that tragic flaw means क्या? Tragic flaw traditionally that defect in a tragic hero. ये this is a very important point. Defect, some weak point. तो tragic flaw it shows what? It shows the defect or weak point or hamartia. And this tragic flaw is in Greek is known. Already मैं इसको define कर चुका हूँ। Tragic flaw को ग्रीक में क्या कहा जाता है? डेस्टिनी सर। No एग्जैक्ट वर्ड यूज करिए ना। डेस्टिनी इज नॉट अ ग्रीक वर्ड, इतनी बार बताया गया। हैमार्सिया नहीं बताया गया था अभी। कीप इन योर माइंड, या हैमार्सिया मीन्स ट्रेजिक फ्लॉ इन ग्रीक। इफ यू गो विथ ट्रेजिक फ्लॉ, दैट इज हैमार्सिया। This tragic flaw traditionally it refers to what? It refers defects or weak point in a tragic hero or heroine which leads to their downfall, और यही उसका जो है क्या बनता है? उसके डाउनफॉल का कारण बनता है। If you go with Hamlet, then what is the tragic flaw of Hamlet? What Evil is the ambition. tragic flaw? Yes, good. That is what? That is evil ambition. That is evil ambition. If you go with what? If you go with Hamlet, what is the tragic flaw? That is the delay in action. Delay in action. To be or not to Delay be. in action. Yeah. If you go with what? If you go with King Lear, you will come to know what? That was what? That was a credulous. He believed very well, very soon in his daughters. He could Yes, not sir. read. वो उसका वीक पॉइंट है। उसने विश्वास किया चिकनी चुपड़ी बातों में। बीइंग अ किंग यू हैव टू बी स्मार्ट। बीइंग अ किंग यू मस्ट नो कि कौन गलत कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। तो ये चीजें क्या कही जाती है? ट्रेजिक फ्लॉ कहा जाता है। लेकिन यही ट्रेजिक फ्लॉ का एक और नाम दिया गया था, याद है अभी जब मैं आपको पढ़ा रहा था? दैट वाज द ह्यूब्रिस। ह्यूब्रिस क्या है? Other form of डिसोबे emancipation. ऑफ डिवाइन। यस, Divine order. disobeying of Disobeying. divine one। डिवाइन ऑर्डर।
divine order or divine warning, hubris, another form of tragic hamartia. सो ये चीजें उसके डाउनफॉल का कारण बनेगा, किसके? ट्रेजिक हीरो का। टू ऑल इंटेंट्स एंड पर्पस अ सिनोनिम फॉर द ग्रीक हाइमार्सिया। जो ट्रेजिक फ्ला है या ग्रीक के हाइमार्सिया का सिनोनिम है, इसी का एक रूप और आपका क्या है? ह्यूब्रिस। ऑलरेडी आई एक्सप्लेन। नाउ यू विल कम टू नो पेरीपीटिया, ग्रीक सडन चेंज। पेरीपीटिया का मतलब क्या है? सडन चेंज। ऑलरेडी अभी मैंने आपको बताया था कि रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून, पेरीपिटी इज अ रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून ऑफ फॉल। अचानक कोई चीज राइट डायरेक्शन में जा रही है, फिर वो चीज क्या हो जाए? रिवर्स हो जाए। अनएक्सपेक्टेड चेंजेस कम, a fall. In drama, usually the sudden change. If anyone asks you what is peripetia in drama, that is one sudden change of fortune. और किसका sudden change? फॉर्च्यून का sudden change. अभी आपका लक बहुत अच्छा था, अचानक लक ने क्या किया? बैक गियर लगाया और सब कुछ बदल गया। फ्रॉम प्रॉस्पिरिटी टू रूल, बहुत अच्छा शब्द है, फ्रॉम प्रॉस्पिरिटी टू रूल। जब प्रॉस्पिरिटी से, समृद्धि से बर्बादी की ओर करवट ले ले आपका फॉर्च्यून, तो वह चीज क्या होगा? पेरीपीटिया होगा। बट इट कैन बी द अदर वे अबाउट, और यह दूसरा रूप भी हो सकता है कि बर्बादी से अच्छाई का भी करवट ले ले। दोनों चीजें हो सकती है, फ्रॉम प्रॉस्पिरिटी टू रूल, बट इट कैन बी द अदर वे। देन दिस इज व्हाट पेरीपेटिया का मतलब यही होगा था, सडन चेंज। सांप सीढ़ी का। या यू कैन जस्ट गिव दैट एग्जांपल आल्सो। या Ruin to prosperity भी हो सकता है सर, पेरिपेसिया। या फ्रॉम rule to prosperity, yes, from rule to prosperity, from rule to prosperity. But in tragedy always you find from prosperity to rule. Yes sir. Yeah, so in this way what I want to say, हमें कुछ नहीं करना, छोटा छोटा चीज समझना है। पेरीपीटिया क्या है, ट्रेजिक फ्ला क्या है, कैथारसिस क्या है, ह्यूब्रिस क्या है, हाइमार्सिया क्या है। इफ यू कम टू नो कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिक हीरो क्या है, अरिस्टोटल का जो डिफिनीशन है वो क्या है, these things you have to define. So when you go with these words, just try to understand these are very significant words, and in this way you came to know about what you came to know: Aristotle's concept of tragedy, you came to know about Greek concept of tragedy, you also came to know some literary terms ki if you have to define peripetia, you can define hamartia, you can define hubris, you can define tragic hero, you can define Aristotle's concept of tragedy, you can define, you can also even define key in common sense what is tragedy. So now I have done, and today I will send you 3 video. कल की क्लास का मैंने नहीं भेजा था, आज की क्लास का मुझे भेजना है। और एक और प्लेटफॉर्म पे मैंने जो है निगेटिव कैपेबिलिटी, एंड आई हैव डिस्कस्ड egotistical sublime, I have discussed touchstone method, and I have also gone with the term philistine, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे प्लेटफॉर्म पे मैंने डिस्कस किया है। एंड आई हैव सेंट यू नोट्स मैंने पीडीएफ फाइल में, तो वो वीडियो भी मैं अभी आपको दोनों भेज दूंगा उसका थोड़ी देर। ठीक है, नाउ एंडिंग दिस सेशन। Thank you, sir.